We have done, I think, 2 or 3 problems on that day. What we have seen, Fourier series in the interval 0, 2 pi. And we had the Fourier series f of x is equal to a0 by 2 plus summation n varying from 1 to infinity. When I write n varying from 1 to infinity, n takes the values 1, 2, 3, etc. till infinity. Okay, it is not taking any fractional values. N is taking only the integer values from 1 to infinity. A n cos nx plus b n sin nx. So our aim is to calculate these Fourier coefficients a0, an and bn. So we know how to calculate a0. A0 is 1 by pi. Whatever is the interval given, that it has lower limit and upper limit. Whatever is the function given, integrate that function between the limit 0 and 2 pi. Similarly, an means this function multiplied by cos nx and integrate between the limit 0 to 2 pi. And everywhere you have 1 by pi outside. Similarly, bn is equal to 1 by pi integral 0 to 2 pi fx sin nx dx. Okay? So our aim is, you will be given a function, you will be given an interval, you will be asked to write the Fourier series for that particular function. So our aim is to calculate a0, an and bn. A0 is the integration of that function as it is. An is the integration of f of x multiplied by cos nx, and bn is f of x multiplied by sin nx between the limit 0 and 2 pi. And we have also seen cos n pi is minus 1 raised to n, sin n pi is always equal to 0. Cos n pi means n has to be an integer. Cos pi, cos 2 pi, cos 3 pi. N will not take the values cos, like n will not take the value 1 by 2, because cos pi by 2 is not equal to, cos pi by 2 is cos 3 pi by 2, cos pi by 2 is 0. So we want cos n pi where n is the, integer. So cos n pi is minus 1 raised to n, which means when, when n is odd, cos n pi will be minus 1. When n is even, cos n pi will be equal to 1. And sin n pi is equal to 0 for all the values of all the integer values of n. Okay? So we'll continue with this, different types of problems. So please write down, don't see that, otherwise once you solve it on your own, it is going to be easy. I told you all the intervals, everywhere you have to calculate a0, an and bn. So once you write it, then you will know how to integrate, how to apply the limits, which terms are becoming 0 and all those things. So we have done 3 problems that day. So now find a Fourier series to represent f of x is equal to x sin x in 0 to 2 pi, and hence deduce that summation n varying from 2 to infinity 1 upon n square minus 1 is equal to 3 by 4. Find a Fourier series. So we know the Fourier series expansion is f of x is equal to a0 by 2 plus summation n varying from 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx. So for this function, our aim is to calculate a0, an and bn. So first we will calculate an. We know that f of x is given as x sin x in the interval 0 to 2 pi. So now we have to calculate a0. A0 is the integration of f of x between the limit 0 and 2 pi. So a0 is equal to 1 upon pi integral 0 to 2 pi f of x dx. ठीक है, तो जो फंक्शन है उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और उसको इंटीग्रेट करना है. As it is, we have to integrate the function to get the coefficient a0. So we know that the function is x sin x. तो हम लोग f of x को x sin x सब्स्टिट्यूट करना है. So first step is write the Fourier series, write the function given, then calculate a0, an and bn. So first we are calculating a0. Now a0 is 1 by pi integral 0 to 2 pi f of x dx. Since f of x is x sin x, replacing f of x by x sin x.
अभी हमें इसको इंटीग्रेट करना है। x sin x को कैसे करेंगे उसका इंटीग्रेशन? How do we integrate x into sin x? Again UV rule. So UV rule में हमें, yes, it's UV rule. We have to take one function as u, other function as v. So when we have an algebraic function is taken as u because we have algebraic and trigonometric function. So algebraic function is taken as u and the trigonometric function is taken as v. So apply u into v. Yes. So how to write that? First function, जो भी u है उसको वैसे ही लिखना है. Then integral v in uv or integration by parts. The first term is u integral v. तो हमने u x को u लिया है और sin x को v लिया है. तो पहले u लिखना है, फिर इंटेग्रल ऑफ v. sin x का इंटेग्रल हो गया minus cos x. Again I'm telling you, please write u integral v in separate brackets. Okay? पहले u को ब्रैकेट में लिखना है, फिर इंटेग्रल v को ब्रैकेट में लिखना है. उसके बाद सेकेंड टर्म इज माइनस. पहले वाले टर्म का डेरिवेटिव निकालना है और सेकेंड ब्रैकेट टर्म का इंटीग्रेशन निकालना है. तो x का डेरिवेटिव 1 माइनस cos x का इंटीग्रेशन विल बी माइनस sin x. फिर नेक्स्ट टर्म प्लस आएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसीलिए वी आर नॉट राइटिंग द नेक्स्ट टर्म. ओके, सो u इंटेग्रल v माइनस इसका डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव लिखना है और इंटीग्रल v का इंटीग्रेशन लिखना है. सो गो ऑन डिफरेंशिएटिंग द अलजेब्रिक टर्म एंड इंटीग्रेटिंग द इंटीग्रल v टर्म. देन अप्लाई द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट. तो x को 2 पाई पुट करना है और x को 0 पुट करना है. सो अगर मैंने x को 2 पाई पुट किया तो व्हाट इज cos 2 पाई? अभी हमें अपर लिमिट अप्लाई करना है तो x को 2 पाई पुट करना है. So अगर मैंने x को 2 पाई पुट किया तो cos 2 पाई. cos 2 पाई इज एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई. इवन मल्टीपल ऑफ पाई मतलब cos की वैल्यू 1 हो जाएगी. यस, तो ये हो जाएगा 1. sin 2 पाई इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 2 पाई? इट इज 0. तो cos 2 पाई इज 1, sin 2 पाई इज 0, and if I apply the lower limit, x will become 0, sin 0 will become 0. तो हमें अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट अप्लाई करना है. तो x के बदले अपर लिमिट और x के बदले लोअर लिमिट. लोअर लिमिट पूरा टर्म 0 हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे जब x को 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा और sin 0 में sin 0 इज 0. तो दोनों टर्म 0 हो जाएंगे जब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो खाली अपर लिमिट रहेगा. तो मैंने फिर भी अभी भी सिंप्लीफाई नहीं किया है, सेम ब्रैकेट टर्म वैसे का वैसे ही रखा हुआ है. उसके बाद now substitute for cos 2 pi as 1, sin 2 pi as 0. तो क्या बचेगा? 1 by pi 2 pi. cos 2 pi is 1, तो minus 1 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा minus 2 pi. sin 2 pi is 0. If I simplify, we will get a0 to be equal to minus 2. ठीक है, तो a0 जो है, जो फंक्शन दिया है उसको इंटीग्रेट करना है. लिमिट भी दिया रहेगा प्रॉब्लम में. Okay, we don't have to see anything. Limit will be given, function will be given. We have to just integrate that function between the limits 0 and 2 pi. ठीक है, तो a0 की वैल्यू हो गई -2. Now calculate an. an थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पे because we have x sin x function है और cos nx और एक रहेगा, थोड़ा बड़ा फंक्शन हो जाएगा. But that also if you do it systematically, you will get the answer. ठीक है, a0 हो गया सबका. Then we can move to an function. जो फंक्शन है उसको एज इट इज इंटीग्रेट करना है. और यहाँ पे x इंटू साइन एक्स फंक्शन था, इसके लिए हमने यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई किया है. देन अप्लाई द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट. ओके, सो नेक्स्ट विल मूव टू an. an हमको पता है, जो भी फंक्शन है उसको cos nx से मल्टीप्लाई करना है और इंटीग्रेट करना है. 1 by pi is going to be outside for all the Fourier coefficients. an के मतलब इंटीग्रेशन के पहले 1 by pi रहेगा, bn में भी रहेगा और a0 में भी रहेगा. So 1 by pi is common everywhere in all the Fourier coefficients. Integral limits are also same. तो an निकालने के लिए हमें फंक्शन को cos nx से मल्टीप्लाई करना है. तो फंक्शन क्या था यहाँ पे? x sin x.
तो हमें रिप्लेस करना है व्हाट इज एफ एक्स. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स. ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ना तीन फंक्शंस आ गए. एक्स भी है, साइन एक्स भी है, कॉस एन एक्स भी है. बट एक्स इज एन algebraic function, sin nx cos nx is a trigonometric function. So we will simplify this trigonometric function using trigonometric identities and reduce that to two functions. ठीक है, ताकि हम separate कर सकें उसको. So now we are having sin a cos b form. Okay, we are having sin a cos b form. So what is sin a cos b? Sin a plus b plus sin a minus b upon 2. Right, so sin of a plus b. Now sin a cos b. Sin a cos b comes in the expansion of sin a plus b and sin a minus b. अगर हम sin a plus b का फॉर्मूला लिखेंगे तो उसका फॉर्मूला है sin a cos b plus cos a sin b. Similarly sin a minus b भी लिखेंगे तो sin a cos b minus cos a sin b. तो sin a cos b का जो टर्म है वो फर्स्ट टर्म है दोनों एक्सपेंशन में. इसीलिए when we add that we will get the first term and when we subtract we will get cos a sin b. So here now it is sin a cos b. तो यहाँ पे a क्या है, x है, b है nx. So what I will do is now I'll take x common and then write the function. तो कैसे लिखना है, 2 is missing here, so multiply and divide by 2. So we will get 1 upon 2 pi. x तो वैसे ही रहेगा, sin a cos b. a is x, b is nx. तो a plus b क्या हो जाएगा, x plus nx. a is x, b is nx. तो a plus b हो जाएगा x plus nx. तो आई हैव टेकन x कॉमन. ठीक है, एक स्टेप मैंने स्किप किया है यहाँ पे. a plus b टर्म हो जाएगा x plus nx. So when I take x outside, I will get 1 plus n into x plus sin of a minus b. तो sin of a minus b हो जाएगा x minus nx. x minus nx में x is common, तो 1 minus n बचेगा यहाँ पे. ठीक है, तो we will get x into sin 1 plus nx plus sin of 1 minus n into x. तो अभी x को अंदर ले लेंगे हम लोग. तो we will get two functions, x sin 1 plus nx plus x sin 1 minus n into x. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या किया, हमने an निकाला है, an में फंक्शन सब्स्टिट्यूट किया है. यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो we are simplifying this trigonometric function using the trigonometric identities and using 2 sin a cos b. तो 2 is missing, so multiplying and dividing by 2. sin a cos b का फॉर्मूला है sin a plus b. a plus b का मतलब हो जाएगा यहाँ पे x plus nx. तो x plus nx में x कॉमन है, इसके लिए 1 plus nx लिखा है यहाँ पे. एंड a minus b में x minus nx हो जाएगा, that will be 1 minus n into x dx. ठीक है, उसके बाद x को अंदर ले लिया है, तो x sin 1 plus nx plus x sin 1 minus nx. Now integrate. इसको अलग से इंटीग्रेट करना है, इसको अलग से इंटीग्रेट करना है. दोनों अभी u into v फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दो फंक्शंस हैं यहाँ पे, दोनों के लिए हमें uv अप्लाई करना पड़ेगा. So now applying u into v for x into sin 1 plus nx and x into sin 1 minus n into x. ठीक है, तो अगर uv अप्लाई किया, फिर से हम लोग algebraic फंक्शन को u ले लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को v ले लेंगे. तो राइटिंग u इंटेग्रल v. फर्स्ट टू टर्म्स के लिए x वैसे ही रहेगा, साइन का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस. जो टर्म है वैसे का वैसे ही रखा है, डिवाइडेड बाय द कांस्टेंट टर्म विच इज 1 प्लस n माइनस x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव लिखना है, तो माइनस कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन, और एक बार 1 प्लस n आ जाएगा, इसके लिए 1 प्लस n द होल स्क्वायर. ठीक है, तो क्या किया है, पहला फर्स्ट फंक्शन लिया है, उसमें u इंटू वी अप्लाई किया, u इंटेग्रल v. तो पहले u लिखा है, इंटेग्रल v लिखा है, माइनस x का डेरिवेटिव 1 माइनस कॉस का डेरिवेटिव इज माइनस साइन. तो ये दो टर्म्स हो गए. फिर ये दोनों के लिए हमने u इंटू वी अप्लाई किया है, फिर से u इंटेग्रल v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटेग्रल ऑफ माइनस कॉस विच इज माइनस साइन.
Okay, so we have two terms, so we are applying u into v two times. ठीक है, clear है ये वाला part? So first we are separating the trigonometric functions. Once the trigonometric functions are separated, we can apply u into v because we have only two functions now. Here we had three functions. So reducing that to two functions by using this identity and then applying u into v. ठीक है? We have just applied, so don't simplify. ये पूरे 1 plus n is going to be a constant. n क्या क्या values लेंगे? n will take the values from 1 to infinity, है ना? तो n कोई भी number रहने दो, जो भी it's going to be a constant. इसलिए इसको divide कर रहे हैं and then इसका integration यहाँ पे लिखना है, ये term का integration यहाँ पे लिखना है. There is no use of applying substitution method here. सब्सटीट्यूशन मेथड से अगर हमारा इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई हो रहा है तो यू कैन अप्लाई सब्सटीट्यूशन प्रोवाइडेड वी शुड बी एबल टू इंटीग्रेट द फंक्शन. हम किसको सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे सर्वज्ञ? जस्ट टेल मी which function has to be substituted here. We will not get an easy, if I'm getting a simpler form when I substitute, then you can substitute. अगर हमारा इंटीग्रेशन हो रहा है इजीली, यू कैन डू यूज एनी मेथड प्रोवाइडेड वी शुड बी एबल टू इंटीग्रेट द फंक्शन. ओके, सो इसीलिए मैंने यहाँ पे u into v किया है बिकॉज सब्स्टिट्यूशन विल नॉट हेल्प इन दिस केस. इसके बाद हमें क्या करना है? अप्लाई द अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट. ठीक है, अप्लाइंग द अपर लिमिट, तो मैंने वैसे और एक स्टेप लिख दिया है. I've just written as it is again. 2 pi x के बदले 2 pi, पूरे चार टर्म्स पहले लिखे, फिर x के बदले 0. जब x के बदले 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 है तो पूरा टर्म 0. यहाँ पे अगर x को 0 पुट करेंगे तो साइन 0 इज 0. यहाँ पे फिर से x है 0 और यहाँ पे साइन फंक्शन है 0. तो लोअर लिमिट विल बिकम 0. Okay, when I apply x equal to 0, all the four terms will become 0. So now we are applying only the upper limit. तो यहाँ पे -0 मैंने लिख दिया है lower limit के लिए. Applying the upper limit में हर एक जगह x के बदले 2 pi substitute किया. Okay. Now I told you n takes the values from 1, 2, 3, 4, etc. तो अगर 1 plus n into 2 pi है, so what will be the value of cos 1 plus n 2 pi? N is a number. N varies from 1, 2, 3. N takes the values from 1, 2, 3, 4, etc. अगर suppose मैंने n को 1 लिया, तो ये हो जाएगा cos of 1 plus 1 into 2 pi, or I can write cos 2 into 2 pi or cos 4 pi. So what will be the value of cos 4 pi? It is going to be 1. Similarly, अगर मैंने n को 2 पुट किया, तो 1 plus 2, 3 into 2 pi. 3 into 2 pi, again that will become cos 6 pi. Cos 6 pi is again equal to 1. है कि नहीं? Whatever may be the value of n, this value is always going to be an even multiple of pi. The reason is 2 is there. 2 is multiplied by n plus 1. तो n अगर even होगा, odd होगा, n plus 1 odd होगा, जो भी होगा, when I multiply by 2, it is going to be an even number. तो ये पूरा term 1 हो जाएगा. वैसे ही this is going to be sine of an even multiple of pi. Sine of an even multiple of pi is again 0. This is also cos of an even multiple of pi. तो ये भी 1 हो जाएगा और ये वाला part 0 हो जाएगा. If you're not understanding this part, you can also write, the confusion हो रहा है तो इसको expand करो. Okay, cos of a plus b. तो cos, अगर मैंने 2 pi को अंदर लिया तो we will get cos 2 pi plus cos 2n pi. फिर cos of a plus b का फॉर्मूला, cos a cos b minus sin a sin b. So cos 2 pi is 1, cos 2n pi is also 1, sin 2 pi is 0. So second term will become 0, or I can write cos 1 plus n 2 pi is equal to 1. ठीक है? You can always expand that also. Otherwise, you can just give the values and check the value of cos this. अगर n को 1 किया तो cos 4 pi आ जाएगा.
n को 2 पुट किया तो cos 6 pi हो जाएगा. Whatever is that, we are going to get always an even multiple of pi. इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी यहाँ पे. ठीक है. तो similarly you can expand cos of 1 minus n into 2 pi. That is it. The steps are not required. If you don't understand directly how to substitute the values, you can expand the value. You can expand the function and calculate the values. Similarly, अगर sin का हमने expand किया तो sin a plus b. अगर 2 pi को अंदर लेने के बाद sin of a plus b का फॉर्मूला यूज करना है तो sin a cos b plus cos a sin b. Again, sin 2 pi is 0, cos 2 pi is 1, but sin 2n pi is 0. So both the terms will become 0. We will get 0. Similarly, this is also equal to 0. Okay? You can do it directly. I'm just showing you how you can also use this expansion method to calculate the values of cos 1 plus n 2 pi etc. ठीक है. मतलब क्या हो गया, ये वाला टर्म 1, ये 0, ये 1 और ये 0. तो write the next step with the terms having 1 as in the numerator and other terms we need not write. Whichever terms are becoming 0, we need not write it in the next step. ठीक है. आया समझ में क्या कर रहे हैं हम लोग? We have to substitute the value of this. तो मैंने यहाँ पे expand करके भी दिखाया है. Directly also you can calculate. Just give the values of n and check what is the value of cos 2 pi. अगर values change हो रही है तो we cannot write it. If you are getting a common value, then only we can simplify that. So I'll write this step again in the next slide. Okay. ये है 1, ये 0, ये 1 और ये 0. तो we will get 2 pi. ये जो है ये 1 है. तो I will get minus is already there. तो minus 1 हो जाएगा 1 plus n. ये पूरा टर्म 0 है तो यहाँ पे माइनस या प्लस 0 we can write maybe. प्लस यहाँ पे 2 pi है, इसकी वैल्यू -1 है तो -1 upon 1 minus n और फिर ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा. ठीक है. तो we are substituting for cos 1 plus n 2 pi, cos 1 minus n 2 pi, sin 1 plus n 2 pi and sin 1 minus n 2 pi. sin वाले टर्म्स पूरे 0 हो जाएंगे, खाली cos वाला टर्म बचेगा. तो 2 pi this will become 1 तो -1 हो जाएगा. यहाँ पे भी this will become 1 तो -1. Only these two terms will remain. Now again you can take common. अभी 2 pi is common, minus sign is common. Take those terms common. I think 2 pi also will get cancelled once I take 2 pi common. तो मैंने माइनस और 2 pi common लिया है तो 2 pi cancel हो जाएगा और -1 वैसे का वैसे ही रहेगा. यहाँ बचेगा 1 plus n, यहाँ बचेगा 1 upon 1 minus n. ठीक है. Then cross multiply. Simplifying this, so 1 minus n plus 1 plus n upon 1 minus n square. N and n will get cancelled. I can write this as -2 upon 1 minus n square. Now I told you, n takes the values from 1, 2, 3, 4. Now when I write n is equal to 1, ये पूरा टर्म इंफिनिटी हो जाएगा. अगर मैंने n को 1 पुट किया तो -2 upon 1 minus 1 that is equal to -2 upon 0 which will become infinity. Which means that whatever an we have calculated, that an is not true for n is equal to 1. है ना. बाकी कोई भी वैल्यू रहने तो डिनोमिनेटर 0 नहीं आएगा. But when n is equal to 1, the denominator becomes 0, which means that an is not defined for n is equal to 1. So I want to cancel this minus sign. So I'm just taking the minus sign outside from the denominator, writing it as 2 upon n square minus 1. So this an is not true for n equal to 1. Or this is true only for n not equal to 1. ठीक है. तो हमें चेक करना है after calculating an and bn, is this value true for all the values of n? वो हमेशा हमको चेक करना है. हमेशा an निकालने के बाद जस्ट चेक करो कि अगर हम n को 1, 2, 3, 4 पुट करेंगे whether
that function is becoming infinity or not. तो यहाँ पे when I put n is equal to 1, the whole function becomes infinity, which means that this is not true for n equal to 1. तो अभी हमें a1 निकालना पड़ेगा. Okay, an is, this is the value for an where n is not equal to 1. तो अभी हमें a1 सेपरेटली निकालना पड़ेगा. जैसे हमने an निकाला वैसे ही हमें a1 निकालना पड़ेगा. ठीक है? So clear this part? So always after calculating an, check whether this value, whatever answer you have got, is it true for all the values of n from 1 to 1, 2, 3, 4, not the fractional values, only 1, 2, 3, 4. अगर कोई भी वैल्यू के लिए आंसर इंफिनिटी आता है तो द फंक्शन वैल्यू इज नॉट ट्रू फॉर दैट पर्टिकुलर नंबर. तो यहाँ पे अगर n को 1 पुट किया तो ये पूरा फंक्शन इंफिनिटी हो जाता है. इसलिए दिस इज नॉट ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. नाउ कैलकुलेट a1. an क्या था? an क्या था हमारा? व्हेन आई राइट an, द फॉर्मूला वाज 1 by pi इंटीग्रल 0 to 2 pi fx into cos nx. an है तो यहाँ पे cos nx आता था. हमें n को 1 पुट करना है तो a1 निकालना है. तो a1 is 1 by pi इंटीग्रल 0 to 2 pi x sin x into cos x. ठीक है? तो दिस इज x sin x into cos x. an में यहाँ पे cos nx आता था. फंक्शन तो सेम रहेगा. an में यहाँ पे cos nx आता था. यहाँ पे a1 निकालना है तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी. So we will write x sin x into cos x. Again integrate this. अगर sin x cos x को सिंप्लीफाई करना तो कैसे लिखेंगे उसको? sin x cos x. What is the function? Sin. Can you write sin x cos x as one single term? Is it possible? Sin a cos a. Yes, correct. Sin a cos a. Sin a cos 2 sin a cos a is sin 2a. So here 2 is missing. We will multiply and divide by 2. Or I can write this as 1 upon 2 pi integral 0 to 2 pi x into sin 2x dx. Correct. Sin 2x. Sin a cos a है तो इसीलिए sin 2x dx. Again use u into v. Taking x as u, sin 2x as v. Calculate the value of a1. Just try this. Tell me what will be the value of a1. Use u into v and calculate the value of a1. Why we are calculating a1? Because the answer which we have got for an is not true for n equal to 1. So इसीलिए n equal to 1 we are calculating separately a1. Just tell me what is the value of a1 after integrating u into v apply करने के बाद. Apply the upper limit, lower limit and tell me what will be the answer. Minus 1 by 2. Okay. Okay. So let's check that. तो कैसे u into v अप्लाई करना है? पहला u इसका इंटीग्रेशन sin 2x का इंटीग्रेशन इज माइनस cos 2x अपॉन 2. फिर माइनस x का डेरिवेटिव 1 माइनस cos 2x का डेरिवेटिव माइनस sin 2x अपॉन 4 बिटवीन 0 and 2 pi. Apply the upper limit and the lower limit. When we apply the upper limit, यहाँ पे 2 pi हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 pi. Cos 4 pi is 1, sin 4 pi is 0. When x is 0, ये 0 हो जाएगा, sin 0 0 हो जाएगा. तो क्या बचेगा? 2 pi into this and then that is equal to खाली ये टर्म बचेगा 2 pi. and यहाँ पे divide by 2 भी है तो ये 2 भी cancel हो जाएगा, minus pi बचेगा. So 1 upon 2 pi into minus pi will become minus 1 by 2. Yes. So you have got the correct answer, minus 1 by 2, correct. Okay. an जो है उसमें से n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी ना. Okay, when I write summation, when we write the Fourier series, we write n is equal to 1 to infinity. तो यहाँ पे हमें a1 को सेपरेट करना पड़ेगा और वहां पे summation में n is equal to 2 to infinity आएगा.
That is why it is given in the problem also, summation n varying from 2 to infinity. ठीक है, तो a1 is equal to -1/2. Now calculate bn. It's a lengthy problems, I do understand. लेकिन एक बार प्रैक्टिस किया तो बहुत इतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा. यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. They are lengthy. Write the formulas correctly, substitute the function. Mostly it is u into v, या फिर trigonometric functions का शायद हो सकता है, या फिर e raised to. Only 3 types of functions we are having. वो 3 टाइप हमको देखना है कैसे करना है. So calculating bn. Bn is equal to 1 by pi integral 0 to 2 pi fx into sin nx. Fx into sin nx. Fx is x sin nx, so it is 1 by pi integral 0 to 2 pi sin x into sin nx. Again, we are having 3 functions. Okay, so try to simplify these 2 trigonometric functions, sin A, sin B. So what is 2 sin A, sin B? What is the formula for 2 sin A, sin B? Cos of a minus b minus cos of a plus b. अगर 2 है तो 2 sin a sin b is cos of a minus b minus cos a plus b, because sin a sin b comes in the expansion of cos a plus b and cos a minus b. Okay? In cos a plus b we have 2 sin a cos a cos b minus sin a sin b, and cos a minus b we have cos a cos b plus sin a sin b. Since we require 2 sin a sin b, we have to subtract cos of a minus b minus cos of a plus b. So using the same formula for sin a sin b here, where a is equal to x and b is equal to nx. So again, cos of a minus b. A is x, b is nx. So a minus b will become 1 minus n into x. A minus b will be x minus nx, which is 1 minus n into x if I take x common. Similarly, minus cos of a plus b, x plus nx, if I take x common, 1 plus n into x. Just applying the formula cos of a minus b minus cos of a plus b. उसमें हमने a plus b और a minus b निकालने के बाद x को common निकाल दिया. That's what we have done here. Now take x inside. So x into cos of 1 minus n into x minus x into cos 1 plus n into x dx. Again apply u into v. Again apply u into v for both the terms. यहाँ पे u into v, यहाँ पे भी u into v. By taking u as x as u and cos function as v. So writing u integral v. Writing u integral v. तो क्या होगा? Same way, पहला u लिखना है, इसका इंटीग्रेशन cos of 1 minus x का इंटीग्रेशन sin, then minus x का डेरिवेटिव 1, इसका इंटीग्रेशन, so minus cos. फिर सेकेंड टर्म में u इंटू वी, x इंटू इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन. पहला टर्म लिखना है u इंटेग्रल v, दैट यू रिमेम्बर. ठीक है, पहला u इंटू वी नहीं लिखना है, हमको u इंटू इंटेग्रल v लिखना है. उसके बाद माइनस इसका गो ऑन डिफरेंशिएटिंग द u फंक्शन एंड इंटीग्रेटिंग द, और फर्स्ट फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करते जाना है
और सेकेंड टर्म को उसको इंटीग्रेट करते जाना है. आफ्टर राइटिंग यू इंटीग्रल फिर से अप्लाई करो 2 पाई एंड 0. So again, as in the previous thing, sine of 1 minus n 2 pi. अगर n की वैल्यू 1 है तो sine 0 2 pi, that is sine 0, which is 0. Similarly, when n is equal to 2, sine of minus 2 pi, that is again equal to 0. It's going to be an sine of integral multiple of pi. तो ये पूरे साइन टर्म्स फिर से 0 हो जाएंगे. तो बचेगा क्या? खाली कॉज वाले टर्म्स. तो कॉज वाले टर्म्स में x को 2 पाई पुट करना है और x को 0 पुट करना है. तो ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया. यहाँ पे अगर x को 2 पाई पुट करेंगे, फिर से cos of 1 minus n 2 pi as we have done in the previous an, this value will be equal to 1. ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा. तो अगर ये 1 हुआ तो minus 1 into minus, that part will become plus. तो plus 1 upon 1 minus n the whole square. ये 0, ये 1, ये टर्म यहाँ पे लिख दिया है. Now this is 0. ये वाला पार्ट 1 है, बट दिस 1 के साथ एक माइनस साइन, दूसरा माइनस साइन और यहाँ पे तीसरा माइनस साइन है. तो वी विल गेट 3 नेगेटिव साइंस, इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया. माइनस 1 अपॉन 1 प्लस n द होल स्क्वायर. फिर से अगर x को 0 पुट किया, अगेन साइन वाले टर्म 0 हो जाएंगे, कॉस वाले टर्म्स बचेंगे. तो माइनस लोअर लिमिट है, तो ऑलरेडी यहाँ पे प्लस है, लोअर लिमिट का माइनस साइन, cos 0 is 1, so 1 minus n the whole square. फिर लोअर लिमिट है, यहाँ ऑलरेडी 3 नेगेटिव साइंस है, तो लोअर लिमिट का और एक नेगेटिव आने के बाद ये प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस n the whole square. ठीक है, हमें पूरा x को 2 पाई पुट करना है और x को 0 पुट करना है. x को 2 पाई पुट करेंगे, x को 0 पुट करेंगे, साइन वाले टर्म 0 हो जाएंगे और कॉस वाले टर्म्स जो है वो 1 हो जाएगा. तो दोनों जगह हमको 1 और 1 पुट करना है when x is 2 pi and x is 0. ठीक है, तो ये बचता है 1 upon 1 minus n square minus 1 upon 1 plus n the whole square, etc. So what is the value of bn now? All the terms are getting cancelled here. 1 upon 1 minus n the whole square minus 1 upon 1 minus n the whole square. ये दो टर्म्स कैंसिल. 1 upon 1 plus n the whole square, यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा. ओके, सो वी आर हैविंग द आंसर एज इक्वल टू 0. bn is 0 प्रोवाइडेड अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 है तो दैट विल बिकम इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी. अगेन दैट बिकम्स एन इंडिटर्मिनेट फॉर्म. ठीक है, एज इट इज तो पूरा कैंसिल हो जाता है. व्हेन डू वी कैंसिल? व्हेन दैट टर्म इज नॉट इक्वल टू 0. नहीं तो कैंसिल नहीं कर सकते हम लोग. ठीक है, so we always write we can cancel these two terms provided when n is not equal to 1. अगर n not equal to 1 है तो ही ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, not for all the values, है ना. बाकी सब वैल्यू के लिए ठीक है. अगर n की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 upon 0, यहाँ पे 1 upon 0, we will get infinity minus infinity. Infinity minus infinity is not equal to 0. It is an indeterminate form. So again, this is equal to 0 for n not equal to 1. This is equal to 0. क्योंकि हम जब हम कैसे कैंसिल करते हैं? Only when that term is not equal to 0. We cannot cancel 0 as it is. We had a thing also like 4 plus 0 equal to, if I say 3 plus 0, we cannot cancel 0 and 0. It's not that way. So 0, it can be cancelled for these terms can be cancelled only if these terms are not equal to 0. Okay, so now it is equal to 0 for n not equal to 1. So in a similar way, calculate b1. जैसे हमने a1 निकाला है वैसे b1 निकालना है. तो b1 में यहाँ पे n के बदले 1 हो जाएगा. So let's do everything the same. To calculate bn in the next step. Some steps maybe you can skip, like if you feel that you can do it in mind, you can do that. Otherwise,
So B1 में n के बदले 1 पुट करना है, तो I will get x sin x into sin x dx. So we will get x into sin squared x. So write sin squared x, simplify that. We know sin squared x is 1 minus cos 2x upon 2. Sin squared x is 1 minus cos 2x upon 2. And calculate the value of B1. Now 1 by 2, I can take it out. This 2 is constant, which can be taken out. After taking 2 out, again I have applied u into v, where मैंने x को एक फंक्शन लिया है, उसको u ले लिया है, और इसको पूरे फंक्शन को v ले लिया है. Or you can take x inside and then use u into v separately. वो भी कर सकते हैं, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको u ले लिया है और 1 minus cos 2x को v ले लिया है. तो पहले u लिखा है, 1 minus cos 2x का इंटीग्रेशन. So 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x upon 2. माइनस x का डेरिवेटिव 1, इसका इंटीग्रेशन. तो x square by 2 plus cos 2x by 4 between 0 and 2 pi. If you're confused, you can take x inside, take 2 outside, इसको ओपन करो ब्रैकेट, x minus x cos 2x. तो x का अलग सा इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं और फिर x cos 2x का अलग सा इंटीग्रेशन. That also can be done. I have not separated that. I have calculated u into v as it is. Same terms आएंगे even if you separate that. Apply the upper limit, lower limit. Tell me what is the value of B1. X को 2 pi put करना है, x को 0 put करना है, and tell me what will be the final answer. Just try करो. X के बदले 2 pi. Sin 2 pi is 0, cos 2 pi is 1. Sin 4 pi is 0, cos 4 pi is 1. Cos 0, 1, sin 0, 0. Substitute upper limit minus the lower limit and calculate the value. Pi, okay. What about others? Harsh's got pi. Then what about others? Same value or something different? X को 2 pi और x को 0 पुट करना है. Pi, okay, okay. Very good. Okay, so we'll see. तो अभी मैंने x को 2 pi पुट किया, तो अगेन 2 pi, x के बदले 2 pi, ये sin 4 pi, 2 pi the whole square by 2, cos 4 pi by 4, and when x को 0 पुट किया तो ये पहला टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 by 4. ऑलरेडी यू हैव ए माइनस साइन, तो लोअर लिमिट का माइनस होके यहाँ पे प्लस हो जाएगा. यस, तो नाउ sin 4 pi is 0. This will become 4 pi square. This will become 4 pi square by 2, and this will become 1 upon 4 plus 1 upon 4. Simplifying, 4 pi square minus 4 pi square by 2, तो ये हो जाएगा 2 pi square. तो 4 pi square minus 2 pi square is minus 2 pi square. जब माइनस अंदर लेंगे तो minus 1 by 4 plus 1 by 4. That will become 2 pi square upon 2 pi. That is equal to pi. Sorry. That is equal to pi. ठीक है, तो B1 की वैल्यू पाई. Bn 0 है, so 2 से लेके इंफिनिटी तक द वैल्यू इज 0, बट व्हेन n इज इक्वल टू 1 द वैल्यू इज इक्वल टू B1 इज इक्वल टू पाई. तो सब्स्टिट्यूटिंग A0, An, A1, Bn, B1 सबकी वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट करनी है अभी. In the final Fourier series, f of x is equal to substituting A0, An, Bn, A1, B1. These are the values which we have got. Bn 0, B1 pi, A1 minus half, An is 2 upon, and A0 is minus 2. Substituting. Now, here we have n is equal to 1 to infinity.
But whatever an and bn we are having, this is not true for n equal to 1. तो जब n equal to 1 है तो उसको हमें अलग से लिखना पड़ेगा. Now when n is equal to 1, ये क्या हो जाएगा? a1 cos x plus b1 sin x. Okay, this is not true for n equal to 1, तो इसीलिए n equal to 1 को हम सेपरेट कर देंगे. So when n is equal to 1, ये हो जाएगा a1 cos x और ये हो जाएगा b1 sin x. तो नेक्स्ट स्टेप, इसको लिखा a1 cos x b1 sin x और उसके बाद समेशन n विल वेरी फ्रॉम 2 to infinity. 1 को हमने यहाँ पे ले लिया है, 2 to infinity an cos nx plus bn sin nx. an value is this and bn value is equal to 0, so we get only this part. ठीक है, अंडरस्टूड दिस स्टेप. हमने क्या किया है, n is equal to 1, a1 b1 हमने अलग सा निकाला है बिकॉज दिस an and bn आर नॉट ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. तो यहाँ पे जब n की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे n को हमने 1 पुट करके उसको पहले लिख दिया है. फिर 2 to infinity को हमने समेशन के अंदर लिखा हुआ है. उसके बाद you substitute the values of an, bn, a1 and b1. So we will have a naught is minus 2. So minus 2 upon 2 will become minus 1. a1 is minus half into cos x. b1 is pi into sin x. Summation n varying from 2 to infinity. an is equal to 2 upon n square minus 1 cos nx. And bn value is equal to 0. So we have this as the expansion. Okay, this is the Fourier series expansion for f of x is equal to x sin x. Now we have to prove some deduction. We have to show that summation n varying from 2 to infinity 1 upon n square minus 1 is equal to 3 by 4. So what should be the value of x? हम x की क्या वैल्यू पुट करेंगे इन सच ए वे दैट वी विल गेट दिस समेशन 0 हो जाएगा. अगर क्योंकि हमें ये वाला टर्म चाहिए, समेशन के अंदर ये वाला टर्म चाहिए, मतलब ये जो टर्म है 1 होना चाहिए. cos nx की वैल्यू 1 होनी चाहिए. तो वी कैन ट्राई विद x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 पुट किया तो cos 0 1 हो जाएगा. तो समेशन 2 वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 2 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 और पूरे यहाँ पे x को 0 पुट करना है. So putting x is equal to 0, left hand side 0, minus 1 by 2 cos 0 that is 1, sin 0 is 0 and this will also become 1. So we can write 0 is equal to minus 1 by 2, this is 1. So minus 1 by 2 will become minus 3 by 2. This is 0, summation n varying from 2 to infinity 2 upon n square minus 1. Now keep this on one side. 3 by 2 to the other side and also take divide throughout by 2 to get the required answer. That is equal to summation n varying from 2 to infinity 1 upon n square minus 1 is equal to 3 by 4. Okay. पहला ही प्रॉब्लम इतना लंबा गया. So many steps. That is why it's asked for 8 marks. Let's take one more problem. पूरा होगा पता नहीं. I'll try. Find the Fourier series to represent f of x is equal to root of 1 minus cos x and 0 to 2 pi. And hence deduce that summation n varying from 1 to infinity 1 upon 4n square minus 1 is equal to 1 by 2. Again, we have to calculate a0, an and bn. A0, an and bn.
but function is given as root of 1 minus cos x. When we have root, it is going to be difficult. We will have difficulty in integrating the function root of 1 minus cos x. So can you remove the root by using trigonometric formulas? रूट को हमें रिमूव करना है, तो कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे लिखना है 1 माइनस कॉस एक्स को? हाउ टू राइट 1 माइनस कॉस एक्स इन सच ए वे दैट समथिंग होल स्क्वायर में आना चाहिए आंसर हमारा. 2 sin square x by 2, correct. 2 sin square x by 2. So I will write, why we are doing is because root is there, and when we have root, u into v applying is little bit difficult, or whatever the integration part also. So we will write root of 1 minus cos x as root of 2 sin square x by 2. Okay. Now we can remove the square root. तो ये हो जाएगा root 2 sin x by 2. Root 2 is the constant which we can take outside the integration. तो function हमारा खाली sin x by 2 है ना. Okay. So f of x is root of 1 minus cos x in 0 to 2 pi, and then we have simplified, use the trigonometric formulas. 1 minus cos x हो जाता है 2 sin square x by 2, that is root 2 sin x by 2. Now the function is root 2 sin x by 2. Root 2 तो constant है, खाली sin x by 2 is the function. Now integrate that function to calculate a0 पहले. So writing the series, calculating a0, an and bn. After calculating an and bn, check whether this an value, this whatever you have got the answer, is it true for all the values of n from 1 to infinity. आंसर इंफिनिटी नहीं आना चाहिए. अगर हम लोग n की कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं तो उसका आंसर इंफिनिटी नहीं आना चाहिए. So we'll calculate a0 first. a0 is equal to 1 by pi integral 0 to 2 pi fx dx. Substitute for fx. Fx is root 2 sin x by 2. Fx is root 2 sin x by 2. Root 2 is a constant. Take outside the integration. Okay. So अगर root 2 sin x by 2 को हमें इंटीग्रेट करना है तो root 2 को बाहर निकाल लेंगे sin x by 2. तो sin x by 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x by 2 अपॉन हाफ. रूट 2 को बाहर निकालने के बाद sin x by 2 का इंटीग्रेशन इज माइनस cos x by 2 अपॉन हाफ बिटवीन द लिमिट 0 एंड 2 पाई. 1 by 2 नीचे है तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो 2 रूट 2 अपॉन पाई इंटू माइनस cos 2 पाई बाई 2. 2 पाई बाई 2 हो जाएगा 2 पाई. So in the next step, this 2 will go to the numerator. a0 का 1 upon 2 pi. 4 2 upon 2 pi. Let's see. So 2 into root 2 upon pi. x को हम 2 pi पुट करेंगे. जब x की वैल्यू 2 pi है तो 2 and 2 कैंसिल होके cos pi. तो माइनस cos pi एंड देन द लोअर लिमिट में माइनस साइन आएगा तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा. cos 0 is 1. Now cos pi की वैल्यू क्या है? It is equal to minus 1. तो cos pi की वैल्यू -1, तो माइनस cos pi will become 1. तो 1 plus 1 into 2 root 2 by pi. This will become 4 root 2 by pi. One upon 2 pi. Is this okay? 4 root 2 by pi. Yes, Yash has got the same thing. 4 root 2 by pi. Correct. And you can just say it's 1 upon 2 pi you have got. I think you cancel this something like that. 2 and root 2. ये 2 जो है वो ऊपर जाएगा, तो तुमने इसको नीचे लिया लगता है मुझे. Something like that. I don't know what mistake you have made. This 2 will go to the numerator, so 2 root 2 upon pi into minus cos pi plus 1, but cos pi is -1, तो ये पूरा term plus 1 हो जाएगा, तो 2 into 2, that is 4 root 2 upon pi. About the formula, okay, which formula is that? कौन सा 1 upon 2 pi? नहीं, I am not using a0 में 1 upon 2 pi. Everywhere I am changing the formula in the series. a0 by 2 वहां पे लिख रही हूँ मैंने पूरे
फॉर्मूला में 1/π ही बाहर रखा है, मैंने 1/2π नहीं रखा है। बोचकर हैज टेकन 1/2π, मैंने हर जगह 1/π लिया है, लेकिन खाली सीरीज को मैंने a0/2 कर दिया है। उन्होंने सीरीज को a0 लिखा है वहां पे। Why I'm keeping like this, so that everywhere you will have the same formula. तो फॉर्मूला में मिस्टेक नहीं होगा बच्चों का। Series is the last 1 mark thing, that is fine, but at least if you write these formulas correctly, for that reason I've taken everywhere 1/π, 1/π. Okay. So next, calculating an. An is equal to 1/π integral 0 to 2π √2 sin x/2 cos nx dx. फिर से √2 बाहर लेना है, तो √2 कांस्टेंट, फिर से sin a cos b का फॉर्मूला, sin a cos b, सेम फॉर्मूला, sin a plus b plus sin a minus b. यहाँ पे u into v नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे देयर इज नो अलजेब्रिक फंक्शन, तो खाली √2 बाहर आ जाएगा, sin a cos b का फॉर्मूला अप्लाई करना है और इसको एज इट इज इंटीग्रेट करना है। तो sin a plus b क्या हो जाएगा, a is x/2, b is nx। तो अगर a plus b किया तो 1/2 x/2 plus nx में अगर x को कॉमन निकाला तो 1/2 plus n। Similarly, a minus b में x/2 minus nx, so 1/2 minus n into x dx. Now integrate both the sign function because we have plus sign in between. Just integrate the function. तो sin का integration हो जाएगा minus cos, here also minus cos upon this. Sin of half plus nx plus sin of half minus n into x dx. Sin का integration minus cos. Then we can take the what is that, LCM here. So 1/2 plus n will become 1 plus 2n/2. Here also 1 plus 2n/2. So I can write minus cos 1 plus 2n/2x and 1 plus 2n/2 plus यहाँ पे भी 1 minus 2n/2, 1 minus 2n/2. So either you can keep 1 plus 2n, 1 minus 2n. मैंने इसको 2n plus 1, 2n minus 1 कर दिया है. That is, it's not required actually. You can take it as 2n plus 1, 2n, 1 minus 2n also. तो मैंने next step में, 10th step है ये. उसके बाद मैं इट इज 1 प्लस 2n/2, इसको मैंने ऊपर लिया है, तो ये हो जाएगा 2/1 प्लस 2n, ये हो जाएगा 2/1 माइनस 2n। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, उसको 2n प्लस 1, 2n माइनस 1 किया है, तो मैंने यहाँ पे 2/2n प्लस 1, यहाँ पे ये 1 माइनस 2n है, तो 1 माइनस 2n हो जाएगा 2/2n माइनस 1। यहाँ पे भी 1/, सो आई थिंक यू विल गेट ए प्लस, नहीं पहले मैंने माइनस साइन बाहर निकाला। ओके, मैंने ये माइनस साइन दोनों टर्म में से बाहर निकाल दिए हैं। स्लाइड नंबर 13। ओके, ओके, नेक्स्ट स्टेप, मैंने यहाँ पे पहले माइनस साइन बाहर निकाला है, तो -√2/π आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर का पार्ट है, मतलब 1 प्लस 2n/2 को मैंने 2/2n प्लस 1 लिख दिया है, इसको 2/2n माइनस 1 लिखा है। तो 2/2 माइनस 2n माइनस 1 लिखना है तो एक माइनस साइन बाहर निकालना पड़ेगा। So that minus sign I have it here. This minus sign is already taken out, and then applied the upper limit and the lower limit. तो 1 plus 2n/2, x के बदले 2π, x के बदले 2π, लोअर लिमिट में x के बदले 0, यहाँ पे भी x के बदले 0. See to it that whether we have proper signs also. पहले माइनस साइन बाहर निकालने के बाद ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया, बिकॉज यहाँ से मैंने एक माइनस साइन बाहर निकाला है, और यहाँ से माइनस साइन बाहर निकालेंगे तो भी cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा होंगे, देयर इज नो चेंज इन द साइन हियर। तो ये हो गया, और फिर हमने x को 0 पुट किया है, तो 1/this, 2/this, with this will become negative, this will become positive because we have lower limit.
कैसे भी करना है करो, it is up to you how you want to simplify. Now what will be cos of 2n 1 plus 2n upon 2 into 2 pi? अभी यहाँ पे 2n 2 cancel हो जाएगा. So 2n plus 1 of pi. What can you say about 2n plus 1? Is it an odd number or even number? Whatever may be the value of n, what will be 2n plus 1? Odd है कि even है? n को 1 पुट करके देखो, n को 2 पुट करके देखो, and tell me what is 2n plus 1? Even है या odd है? Odd रहेगा, क्योंकि हमें अगर n को 1 पुट किया तो 2 plus 1 3, n को 2 पुट किया तो 4 plus 1 5. It is always going to be an odd multiple of pi. An odd multiple of pi is always equal to minus 1. What about 2n minus 1? 2n minus 1 even होगा कि odd होगा फिर से? It is again going to be an odd. 2n minus 1 में अगर n को हमने 1 पुट किया तो 2 minus 1 1 हो जाएगा. That is an odd multiple of pi. ये 2 और 2 cancel हो जाता है तो खाली pi बचता है बाहर. So it is an odd multiple of pi. तो ये पूरा term minus हो जाएगा. Or you can expand using that I showed you cos of a plus b. Yes, cos pi की value minus 1. Correct. So again I've written the step after cancelling 2. फिर से I can expand and show you cos of a plus b. So cos 2n pi, cos of an even multiple of pi is 1, cos of odd multiple of pi is minus 1. ये हो जाएगा minus 1. Similarly, second term is also minus 1. Just complete this A and then you can go for the next lecture. तो ये हो गया minus 1, ये भी हो गया minus 1. You can take 2 also common and then simplify this. When we simplify, okay, we will get minus 4 root 2 by pi into 4n square minus 1. When we simplify, we will, it's only a simplification part. यहाँ से हमें 2 बाहर निकालना है, फिर दोनों को कंबाइन करना है और फिर से 2 बाहर निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है. Now, is it true for all the values of n? Just tell me that. Remaining part is same as bn also, same ही रहेगा. Is it true for all the values of n? मतलब कौन सी वैल्यू ऑफ n के लिए आंसर 0 होता है, आंसर इंफिनिटी आता है? Okay, n takes the values only from 1, 2, 3. Integer values only n takes. इसका मतलब है कि ये कभी भी 0 नहीं होगा. When n is equal to 1 या n is equal to 2, n is equal to 3, कभी भी डिनोमिनेटर का पार्ट 0 नहीं होगा. N will become 0 only when n square is 1 by 4. And 1 by 4 number is not there in the series. ठीक है? So it is true for all the values of n. Similarly, calculate bn, substitute everything in the final answer and calculate the series. ठीक है? Just try this. The remaining part, because it's already time, so you can just try these problems. an already निकाल दिया है, वैसे ही हमको bn निकालना है. If you have any doubt, you can ask me. Otherwise, just calculate an, bn and substitute everything in the series. I'll send the PPT and refer this for calculating bn also. Yes, it's already time, so go for the next lecture. So thank you.